Good evening, everyone. Thank you all for joining. It's too late today, but I hope we will get some good insights today. So, guys, this is Rishabh Kale from RK Advisory. I have been, an analyst since last 8 years. So, those who know me, as many of you might be knowing me, we are connected on LinkedIn. But those who don't know, I will just introduce myself. So, I was an equity research analyst. I have worked almost 8 years into this industry. So, I've worked both on the buy side and the sell side. Lately, I was working with HSBC Global Mutual Funds, where I was tracking the entire globe. So I started as an analyst covering Indian stock market, where I covered the automobile sector, IT sector. Eventually, I became a pharma analyst, where I was covering the Indian pharmaceutical sector. Slowly, I became an assistant fund manager, where I was with HSBC Global Mutual Fund, and I was tracking the entire globe. Rather, I will say US, Europe, and the Chinese market, Asian markets rather. So it's been a long journey, and I hope everyone aspire to be an analyst someday. So the reason I started this teaching NISM exam is because, see, now it is not about exams. I will say, like an analyst like us, we don't prepare for these exams. Probably I might be knowing that you guys come from a different background. That's completely fine. But if you aspire to become a research analyst, and if you look this as an exam, even if you clear it, you will never be able to get a research role. Now I know how many of you over here must have cleared the exam, but are they all into the research roles? Now this is simply saying that a research analyst exam is a license. Okay, if you are driving a car, you require a license. Now let me ask you one thing. Let's say you own a very expensive car. Okay, you own a very expensive car. You get a driving license. Let's say you hire a driver. First of all, if he doesn't have a driving license, will you allow him to ride your car? Will you? Okay, guys, so you can write in the chat box so we can have an interaction, in the chat box. Okay, I will open it to all 1 second so that everyone can. Yeah, I've opened it to all, so you can put it in the chat box so that we can have a good chat. Okay, correct. Correct. No, we will not. Correct. We will not give him. Acha. Now, okay, if you have a license, then probably yes. Okay. You guys are saying yes. I will say one thing. What if he is an inexperienced driver? What if he has just passed the test and straight away he has come to drive your car? And you have an expensive car, let's say a Mercedes or a BMW. Yes or no? Acha, maybe. If it's maybe, then think twice. He has just come off of a driving school and you give him a Mercedes to drive, which is costing almost 1 crore. And it's like 5 meters, 5 meter long car. No, correct? You say no. The same thing if I ask you, if I'm an analyst, I'm a fund manager, you come to me saying that, sir, I have cleared the research analyst exam, give me a research role. I was handling a 10,000 crore fund, or I was a part of a 10,000 crore fund. Will I hire you? 10,000 crore. Achha, forget about that. Okay, forget about me hiring you. Let's say I am also 1 year into the markets. Absolutely no. You say absolutely no. Then why do you expect that after clearing the research analyst exam you will get a research role? I come across various students saying that sir, I want to get into equity research analyst. I have cleared the research analyst exam, so please refer my CV or something like that. So now why is it? I will tell you. I'll just give you a reason. That why is it so that you feel that after clearing research analyst exam you should get a research role? But when I ask you this simple question, will you give your Mercedes to drive to a guy who has just cleared the exam? You are saying no. Achha, now the second question comes, then sir, what to do? So now you tell me, let's say you are a driver. Let's say you are a driver. You have just got your license. Achha, without license, will even a Maruti guy hire you?
without a license? Even if you will you hire a driver without a license? So I will say research analyst exam is a license, but it doesn't mean that it will help you land a role. Okay, it doesn't mean that help you land a role. It is a license, so you should have that. Not having, you are not even eligible only to get a driving to hire as a driver. So it is that simple. So I will keep this research analyst exam where at a simple space, because what now, as an analyst, when we used to think about writing this exam, we never used to open the books. I personally never opened the research analyst book. I will personally say I never opened the research analyst book. उसमें क्या लिखा है, what has written over here, we don't read it. So now why? Because the things that we are doing, we do it on a practical basis. It is not only in the I will say it is not only in the office. Let's say you say, sir, aap to research analyst ho, you have become a research analyst, so you don't need to give this exam. No, it is not like that. Every 3 years, I have to give this exam. But now, since I have been research analyst, it becomes easy. See, but to become a research analyst, I had given that exam, no? So no, I had done an internship. So I had learned financial modeling. I gave, I made reports. Now, while getting an internship, while writing this report, while making the financial model, what I figured out is the research part is very important that people forget. Research part is very important that people do forget, your candidates do forget. So I was doing an intern, I was having a mentor. So, I was staying in I stay in Mumbai. So I tell this to everyone in my class, that I used to travel 40 kilometers just to work under someone free of cost. And I used to actually pay him कि sir मुझे teach me modeling, or teach me equity research, or teach me how to write reports. Or I have taken a different course where modeling and so that time what happened, modeling and research were modeling and report writing was into classes, and then you have to get an internship. So I mix this both, and I tell my students, from RK Advisory, that guys, we should. So I will have club both the things, that I teach modeling and report writing, as well as I give them a practical experience, so that this exam becomes easy. But over the periods, what I found is, okay, CFA for CFA people, this exam is easy. For MBA people, probably it's a bit difficult. And BCom student, obviously, if you are a BCom, you should have this kind of exams cleared. So that is why I started this. Actually, I'm doing this for my students, but somehow, I don't want others to not even have a basic knowledge. So I am currently a professor at Wellinger Institute of Management, Mumbai. I teach in Pune as well, 2-3 colleges. There are small colleges, I will not name it, but I teach in those colleges as well. But what I found out is students are not able to grasp things because they think everything is formula based. Everything is formula based, everything is finance. I think finance is something that you should understand, or you write formulas and then you get an answer, etc., etc. This is not how the research is done. I'll give you a basic one. Okay, now I will use a blank Excel file, a blank Word file. Now with me, you also take notes. So just write something on your book to remember. So I will just write pointers. That only you have to remember, nothing else. Okay, we'll just write pointers. Those things only you have to remember, nothing else. Acha. Few things will be there. Calculations. If you have a calci with you, it's fine, because okay, calcis are not allowed to use in the exam, but you can use Excel. You can use Excel in the exam. So that is why I'm doing everything on Excel. I don't want to take that board and write. I don't want to teach it as an old school, मैंने कुछ topic दिया, theory दिया, and start reading, because that book is 400-300 page book. I have never read it till now. Okay, still we clear the exams. Acha, getting 60 in the exam is okay. I mean, it's okay to clear. Now what happened? I will tell my story. When I was giving this exam, there is some criteria. 20% of the marks is now, maybe out of 100, 20 marks are specific pinpoint related question, that, what is the Companies Act, or what is the penalty, how much penalty should be given if the trades are if you default on a trade, and something like that. So as an analyst, obviously those are specific things which I don't know as a analyst, as a research analyst, but those things can be learned. But that 80% marks, I know everything
will be correct. And if I feel there is a doubt in my question, I completely avoid it. I don't try to answer it forcefully. If I don't know, I completely avoid it. I am okay to get 70 marks, but I know that all the 70 that I have marked are right. That is the confidence. So I still remember I got some 75 marks in the exam, and I have only attended 80. 80 questions I attempted. I thought that 4 questions were right, but that unfortunately that 4 questions were wrong. That's it. I didn't try to attempt the next 20 questions. Now, why is this? Because I had the confidence and I am doing this on a regular basis. Achha, calculator is allowed, but Shubham, Excel is much better than using calculator because Excel is as good as calculator. You can do much stuff on Excel rather than using calculator. So I avoid personally using calculator. If you can use financial calculator which CFA people have, those calculators are not allowed. So hardly it makes sense. So Excel is better. Okay, if you have Excel, why you require a calculator? Okay. Okay. Now, okay, I will open a blank Excel. You also take a notes. Just start taking notes. Basic notes. I don't want to use any theoretical things over here that I take the book and start writing, start going paragraph by paragraph. That is I will say that is purely useless. I feel these all exams are not to be learned. These are exams are to be lived. I will say ये exams ऐसे है जहाँ पे तुमको you have to prove something on it कि you are capable of being a research analyst. You cannot be an analyst just by passing the exam. You can only be by doing things on a regular basis. Some financial concepts are there that I will clear as we progress. Okay. Achha, now, okay, I will open a blank Excel. Now, is the screen visible? Sorry. Yeah, I have opened a completely blank Excel. See, मेरे पास ना यहाँ पे है. I will one second, guys. I'll open my laptop screen and I will just toggle around. See, I have made this sheet. यहाँ पे मैंने सब लिखा है about the research analyst. I have a PDF as well over here. I have a PDF open. है सब चीजें अभी टर्मिनोलॉजीज ना. इफ आई गो बाय डूइंग दिस एक करते जाओगा ना तो पोर्शन कभी खत्म ही नहीं होगा. एंड इट फील्स लाइक 234 पेजेस रीड करना इज अ बिग टास्क. गाइस, मतलब उससे अच्छा ना आई विल रीड नॉवेल, मतलब एक फाइनेंशियल बुक आई विल रीड rather than reading this book, because we think this exam doesn't have any value, will not add any value to us. Now there is things which is very important in this. थोड़े बहुत चीजें ऐसे लिखे हैं जो सोच समझ के मुझे when I was an analyst तब मुझे सब पता चला. Sorry, 1 second. Guys, we will have a doubt solving sessions. तो 15 मिनट लास्ट के will have a doubt, जो भी है तुमको पूछ लेना. I will unmute you. अच्छा, प्लीज keep the doubts to this only. कुछ मुझे मत पूछना सर ये करने के लिए क्या चाहिए, वो करने के लिए क्या चाहिए. Because see, research analyst exam, I will again say this exam is not for teaching. I never teach this anything because I teach financial modeling, I teach equity research reports. All those things are covered over here. Financial modeling, mein everything gets covered. Start to end, cash flows, P&L, balance sheet, etc., etc. But what I found, there are some things which BCom students don't know, MBA students don't know at times, CFA students also don't know, or even if they know, they don't know how to collaborate it. Usually CFA, if you clear level 1 also, it is very easy to clear this exam. But I have also seen people feeling, sir, I failed. Basically, correct. Corporate actions are one which is not a part of CFA books. Some things Indian markets are not related to this because CFA is a US market. Achha, now I will ask you, what is the role of a research analyst? Let's say, now let's think I am your manager, you are my you are my associate. Okay, I'm a manager, you're an associate. Now answer like an associate, don't answer like a student. Assuming you are working with me and others also from RK Advisory, कुछ बकवास किया ना, I will see you in the class then. Okay, answer like an analyst. Okay. Research analyst, मेरे पास ना, I have let's say 5,000 crore rupees with me. ठीक है,
5,000 crore rupees with me. I have to invest this money. Okay. कहाँ पे करूँ? Where should I invest? चलो 5,000 करोड़ ज्यादा हो गया है ना. लेट्स टॉक एज अ फ्रेंड. मेरे पास ना 1 लाख रुपए है. ठीक है. ठीक है. आई हैव 1 लाख रुपीज. गाइस आई आस्क यू एज अ फ्रेंड, एज एन एसोसिएट, वेयर शुड आई इन्वेस्ट द मनी? नहीं, डिपेंड नहीं, वो पता क्या कहाँ पे कर सकते हैं, कहाँ कर सकते हैं. ट्रेडिंग नहीं बोल रहा हूँ मैं, इन्वेस्टिंग की बात कर रहा हूँ. ओके. म्यूचुअल फंड्स. अच्छा एक सेकंड. अच्छा एक सेकंड. क्रिप्टो, डेट, इक्विटी, इक्विटी बॉन्ड्स, डेरिवेटिव्स. अच्छा, डेरिवेटिव्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग. इफ आई टेल यू, एसआईपी इज अ पार्ट ऑफ म्यूचुअल फंड्स. ठीक है. REITs is also a part of mutual funds. Real estate fine. सो ना मेजर पार्ट है. अच्छा ठीक है. तुम ये पर्सनल लेवल पे बात करते, ठीक है. अभी थोड़ा सा विल टॉक अबाउट समथिंग अबाउट बिजनेस में. ठीक है. आई एम स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस. ठीक है. लेट्स टॉक अबाउट फ्रॉम अ बिजनेस पर्सपेक्टिव. मुझे ना एक दुकान खरीदनी है. ठीक है. मेरे को एक दुकान खरीदनी है. व्हाट विल आई रिक्वायर? आई वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस, बेसिक बिजनेस. एक दुकान खरीदनी है, किराना, ग्रोसरी स्टोर. ग्रोसरी स्टोर के मुझे क्या चलेगा? व्हाट आई वांट? लोकेशन. अच्छा, डायरेक्ट लोकेशन. हाँ, आई वांट अ लैंड. लैंड ऑफिस. ओके, अज्यूमिंग वी आर नॉट रेंटिंग इट, वी आर बाइंग इट. अच्छा, नाउ आई डोंट वांट टू यूज दैट वर्ड्स कैपिटल एंड ऑल. लेट्स कीप इट वेरी रॉ. वो मैं बाद में ऑब्वियसली आ जाएंगे. लेट्स कीप इट वेरी रॉ. बेसिक चीज, योर 10th स्टैंडर्ड, अज्यूमिंग आई एम इन 10th स्टैंडर्ड. ओके. Assume now I am in 10th standard. Don't assume I am a fund manager. I am asking you basic questions. What you require? हाँ correct. Money. ठीक है. I require money. बस इतना ही. I want money to start. Okay. Now who will give me this money? I am in 10th standard. Who will give me this money? Parents. Right? Parents will give you the money. It's probably right. And parents, family, friends. अच्छा. Parents will give family. अच्छा, can I say parents means your own money? Usually if your parents your own money. Okay. Own money. Fine. अच्छा. And you said family, friends. अच्छा, will a friend give you for free? फ्री में देगा तुमको पैसा? अच्छा अच्छा. नाउ विल ही चार्ज इंटरेस्ट ऑन यू? इंटरेस्ट पे लेगा. अच्छा, देयर आर टू पार्ट्स. आइदर ही विल गिव यू बाय इंटरेस्ट, और आइदर ही विल से आई वांट प्रॉफिट शेयरिंग. करेक्ट. टू थिंग्स. व्हाई नॉट इंटरेस्ट? व्हाई नॉट इंटरेस्ट? आई विल टेल यू. व्हेन यू से ना कि आई विल पे इंटरेस्ट, इज बिकॉज सी इट वाज माय न्यू बिजनेस. मेरा नया बिजनेस है, तो नए बिजनेस में do I know how much I will earn from that business to pay the interest? Currently, not. So can I say I am at the start of my career, start of my business? Correct. Your friend has given you the money. Fine. Now obviously it is not loan. Loan नहीं है. Start of the business. अभी वही उसने, since he has given me at the start of the business, he is called a venture capitalist. ठीक है. What is called? Venture capitalist. क्योंकि मैंने, क्योंकि he has given me the start of the, तो बस ये फाइनेंशियल वर्ड्स, दिस आर ओनली फाइनेंशियल वर्ड्स, नथिंग एल्स. ही इज आल्सो एन इन्वेस्टर, इन्वेस्टर इन योर बिजनेस. सो ही इज कॉल्ड अ वेंचर कैपिटलिस्ट. अच्छा, व्हेन यू योर फ्रेंड्स गिव यू मनी, व्हाट डू यू गिव हिम? ओनरशिप. गिव हिम द ओनरशिप. हाँ, इक्विटी से नहीं, ओनरशिप दे दे, प्रॉफिट शेयरिंग. अच्छा, ओनरशिप दोगे मतलब क्या दोगे? व्हाट इज द प्रूफ दैट इज एन ओनर? शेयर सर्टिफिकेट. इफ यू नो इफ व्हेन यू ओन अ हाउस, तुम्हारे घर का भी शेयर सर्टिफिकेट होता है. पूछ लेना तुम्हारे डैड को पता होगा. इवन इफ इट्स नॉट फ्रॉम फाइनेंस, ही विल नो. ओके, शेयर सर्टिफिकेट, देयर इज अ शेयर सर्टिफिकेट. ऑब्वियसली ही विल गिव यू शेयर सर्टिफिकेट, एंड इन रिटर्न, अच्छा, ही विल गिव यू मनी, एंड इन रिटर्न यू विल गिव हिम अ शेयर सर्टिफिकेट. करेक्ट.
ये बेसिक हो गया. अच्छा, दिस इज वन वे यू कैन रेज फंड्स. ओके, रेज फंड्स फॉर योर बिजनेस. पेरेंट्स मतलब चलो खुद का पैसा है, योर ओन मनी, अज्यूमिंग पेरेंट्स का तुम्हारा खुद का मनी है, फ्रेंड से तुम लेते हो, ओनरशिप से. अच्छा, इन्वेस्टर्स से भी ले सकते हो. शार्क टैंक, इफ यू वॉच इन्वेस्टर्स. अच्छा, व्हेन शार्क टैंक गिव्स यू मनी. अच्छा, ये जब वेंचर कैपिटलिस्ट इन्वेस्ट करता है, डज योर फ्रेंड से कि मुझे 50% पार्टनर बनना है? ऐसा होता है कभी? डू यू आस्क 50% मनी फ्रॉम योर फ्रेंड्स कि तुमको खुद का बिजनेस चालू करना है, सडनली से कि मुझे अभी पार्टनरशिप चाहिए? सो वेंचर कैपिटलिस्ट आर द वन हु यूजुअली इन्वेस्ट फॉर लेस देन 50%. Okay, and there is someone called private equity. प्राइवेट इक्विटी फंड्स, ठीक है, प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स. ठीक है, नाम है सिर्फ प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स. प्राइवेट मतलब, ठीक है, नाम है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेंचर कैपिटलिस्ट एंड प्राइवेट इक्विटी? अच्छा, दोनों प्राइवेट ही है, देयर इज नो डिफरेंस इन दैट. द मेजर डिफरेंस इज द ओनरशिप. या एंजल इन्वेस्टर्स आर कॉल्ड वेंचर कैपिटलिस्ट. ओके, प्राइवेट इक्विटी ना, व्हाट इज द डिफरेंस? ये भी सेम ही है, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ वेंचर कैपिटलिस्ट ओनली, but there is a minute difference that whenever someone invest as private, कि मैंने तुम्हें privately invest किया है, probably majority of the time they are interested to have, I will say, a majority of the stake. अभी ये सब ना मुझे बुक पढ़ के नहीं समझा है, ये सब मुझे न्यूज़पेपर पढ़ के समझा है. ये सब ना मुझे न्यूज़ बुक पढ़ के नहीं समझा है. I have made a habit for my students that we every day in the morning, every day we have a morning call 10 to 11 a.m. where I talk about all the financial related topics in the market and what has happened, what is increasing, what is decreasing, why it is increasing, why it is declining. First, foremost, you should read newspapers. ये सब चीजें मुझे newspaper पढ़ के आया है. As an BCom student, I used to read Economic Times for almost 4 hours a day. Even today, I'm not an analyst, I'm a tutor now, but still I make time for myself to get up in the morning and read newspapers on a daily basis. Not only read, I tell all my students, ye read karo and then write an article. I have told them on what articles you need to write. All those things ना, ये सब मुझे, I will say, books पढ़ के नहीं आया है. Because since I do it on a continuous basis, मुझे books पढ़ने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ती. Still remember, I CFA level 1 का economics का exam, CFA level 1 economics exam, I didn't even open the book. I just opened the book to see what all topics are there in the book. And when I was reading it, this is very easy. This is very, because all the things come in the newspaper. So what we are doing, I'm sharing my experience with you. Well, again, say I'm not training you to how to pass exam. I am training you on how to become an analyst. वो एग्जाम ट्रेनिंग यू कैन फाइंड लॉट ऑफ बुक्स ना, वो यूट्यूब पे लॉट ऑफ वीडियोस कि ऐसा है एग्जाम पास, ऐसा होता है, वैसा होता है, ये है वो है. मतलब इफ यू आस्क पीपल लाइक अस, माय फ्रेंड्स एंड ऑल, वो बोलेंगे ऋषभ, तुम ये क्या एनआईएसएम का लेके सिखा रहे बच्चों को, बेचते तू. ही विल से कम बैक टू द मार्केट, इट इज अ मच डिसेंट जॉब, ये तुम सिखा रहे हो. तो दैट इज व्हाई नो आई हैव अ रेपुटेशन टू मेंटेन. समझ लेना कि ऐसा है. माय फ्रेंड्स आर फंड मैनेजर्स एट एचएसबीसी, दे आर एट बिग एनालिस्ट रोल्स, लीड एनालिस्ट रोल्स. तो उनसे जब मैं बात करता हूँ तो आई विल नॉट से कि मैं बच्चों को ना एफसीएफएफ सिखा रहा हूँ, डीसीएफ सिखा रहा हूँ. बोले तो फिर तू गलत कर रहा है, यू आर नॉट इनटू द राइट फील्ड, देन यू आर डूइंग इट ऑल फॉर मनी. तो बोला नहीं यार, पैसे से, सी, आई कैनॉट बी अ मिलियनेयर, आई कैनॉट बी एन अंबानी टीचिंग. ओके, सो आई डिडंट स्टार्ट ऑल दिस टू अर्न मनी. आई स्टार्टेड ऑल दिस टू शेयर माई एक्सपीरियंस कि वॉट एवर स्ट्रगल आई हैव फेस इन माई लाइफ एट द अर्ली स्टेज, यू शुडेंट, है ना, यू शुडेंट फेस दैट. एटलीस्ट गेट सम इनसाइट्स सो दैट जब इंटरव्यू में जाओगे तो कुछ तो बात करो. ऐसा मत बोलो कि सर मैंने एनआईएसएम क्लियर किया है. वो मैंडेटरी है, but just because you have class NISM doesn't mean that you are a good analyst or you are eligible to get research roles. Okay, investors ये सब तो मेजरली बोलता है प्राइवेट इक्विटी
is usually majority of the stake. Because what happens when you talk about private equity, मतलब privately investments करना है, in that, let's say I have, my company is called private equity, okay, Warbus Pincus, okay. Now how does it work? Warbus Pincus, याद रखना है ये सब चीजें. This is a private equity fund, okay. Now एक सवाल उठता है ना कि ये फंड अगर दूसरे में इन्वेस्ट करता है तो इसके एम्प्लॉयज क्या करते हैं, तो बता पाएगा? लेट्स से आई एम वागस पिंपस, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं ना ये सब कंपनीज में इन्वेस्ट करता हूँ, ठीक है, इन्वेस्टर हो ना, मैं भी एक इन्वेस्टर ही हूँ, प्राइवेट इक्विटी इज एन इन्वेस्टर ओनली. बट मेरी कंपनी क्या करती है? लेट्स से आरके एडवाइजरी इज एन इन्वेस्टर, मेरे पास बहुत पैसा, आई इन्वेस्ट इन अदर कंपनीज. सो व्हाट इज माय कंपनी डूइंग? एनीवन. मैं किसको हायर करूंगा? ओके, आई विल हायर रिसर्च एनालिस्ट, फाइन. नाउ okay, let's say I have 15 years of experience in the market, okay, I have a lot of money. Will I rely on a fresher research analyst who knows about this, where to invest? Acha, now tell me, in private equity, are we investing or are we owning the company? हाँ, we are owning. तो ओन करने के लिए रिसर्च एनालिस्ट लगते हैं? Do you require research analyst to own a company? So I will give you this example. Usually research analysts भी होते हैं, no doubt, there are analysts, but I will tell you this this thing, how does private equity works. Private equity people hire CEOs, CFOs, ex-CFOs and CFOs. And what is their role? It means, let's say I'm Babas Pincus. I have employees who is a CEO of, let's say, HUL, who is a CEO of, let's say, Marico, ex-CEOs or ex-CFOs, or people who have worked at higher levels, directors, director level people. And what will I do when I buy this company? Let's say as a Babas Pincus, I buy a majority stake in HUL. Okay, example. Now, what I will do, I will tell one of my CEOs who is into FMCG, who has an experience in FMCG, I will say, go and see what is going wrong with HUL. I want this company to turn around. You turn around the company, value, make my value double, triple, and then come back. So actually, I'm not interested in running this company for lifetime. I am just interested कि यहाँ पे जो पैसा मैंने इन्वेस्ट किया है प्राइवेट इक्विटी में, आई वांट दैट मनी टू ग्रो. एंड यूजुअली प्राइवेट इक्विटी जो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, दैट हैपेंस व्हेन द कंपनी इज इनटू डॉलरम्स. डॉलरम्स मतलब कंपनी की वाट लग चुकी है एंड उनको कोई इन्वेस्टमेंट मिल नहीं रहा है, तो ये प्राइवेट इक्विटी डील्स होते हैं. प्राइवेट इक्विटी नहीं, प्राइवेट इक्विटी वाले इन्वेस्ट करते हैं. ये मैं प्राइवेट इक्विटी, दिस इज पीपल, हाँ, पीपल, वेंचर कैपिटलिस्ट, प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स लिख देता है यहाँ पे. वो वर्ड नहीं बोल रहा हूं मैं, दे आर टू डिफरेंट थिंग्स. ओके, हाँ, तो कैन इट बी अ स्टार्टिंग कंपनी? कैन इट बी अ स्टार्टअप? इनिशियल स्टेज हो सकती है क्या? इनिशियल से मतलब चालू ही कर रहे कंपनी. कैन इट बी डिस्ट्रेस कंपनी? चालू ही नहीं हुआ अभी तक, मैंने सिर्फ शॉप लिया है अभी तक, आई हैव जस्ट टेकन अ शॉप, तो ऑब्वियसली इट डजंट मीन कि इट इज अ डिस्ट्रेस कंपनी. ठीक है. सो कैन आई से ये डिफरेंस क्या था वेंचर कैपिटल इसमें? इफ आई आस्क यू बेसिक डिफरेंस, बताओ एक वेंचर कैपिटल में क्या फर्क है और एक प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर में क्या फर्क है? ठीक है, मेजोरिटी माइनॉरिटी स्टेक, उसके अलावा क्या है? विच स्टेज ऑफ द कंपनी दे बाय? Venture capital will buy at early stage, and private equity will buy at probably, venture capital will buy at early stage, but private equity people probably buy at mid हो सकता है, या फिर कभी कभी मैच्योर स्टेज भी हो सकता है.
लाइक मैच्योर स्टेज में कंपनी इज नॉट एबल टू ग्रो, हो सकता है। ये फर्क है दोनों में। दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन वेंचर कैपिटल एंड प्राइवेट इक्विटी, बेसिक डिफरेंस है। बट अभी ये चीज ना वो बुक में लिखी नहीं है, लिखी है किधर तो, बट यू डोंट रिलेट दोस ऑल थिंग्स, इट इज रिटन। बट ये एक बेसिक फर्क है। प्राइवेट इक्विटी, आई हैव कम अप सर, आई वांट टू गो इनटू प्राइवेट इक्विटी, आई वांट टू बिकम एन वेंचर, आई वांट टू बिकम एन हेज फंड मैनेजर। पता भी है क्या चीज है वो, एंड बुक्स में सीधे सीधे चीजें नहीं लिखी है। दैट इज वाई आई हेट बुक्स, आई हेट एनी ऑफ द रीजन एनालिस्ट बुक। पढ़ने के लिए मैं आई कैन रीड इट वंस, बट आई विल मेक अजम्पशंस ऑन माय बेसिस। मैं वो बुक पे बेसिस पे एग्जाम नहीं कर। इवन फॉर सीएफए एट टाइम्स आई यूज्ड टू रीड बुक्स जस्ट टू अंडरस्टैंड कि मुझे क्या पढ़ना है। नाउ ऑब्वियसली चैट जीपीटी के वजह से तो इट हैज बिकम वेरी इजी, बट मेजरली क्या पढ़ना है वो इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज इवन आफ्टर रीडिंग बुक्स, आई हैव स्टूडेंट्स हु हैव सीएफए लेवल 3 क्लियर, उनको बेसिक एनुअल रिपोर्ट पंच करने नहीं आ रहा है। आई हैव सीए स्टूडेंट्स उनको यू नो दे आर नॉट एबल टू स्पीक प्रॉपरली, कि जो कर रहे हैं पीपल हु आर, sorry, so CA CFA students are not able to get into finance role because they don't understand the value of research. उस पे आता हूं मैं, what is their problem, but ये समझा। P investment I've written over here ना Surya, see I've written over here all. Venture capital is 50% minority, majority stake. Usually private equity take majority stake. Okay. अच्छा, now practical question, Shark Tank वाले कौन है, वेंचर कैपिटलिस्ट या प्राइवेट इक्विटी वाले? Who are Shark Tank guys? अच्छा, शार्क टैंक पे जो आते हैं, आर दे इनटू डिस्ट्रेस? खुद अश्नीर ग्रोवर जाके उनके कंपनी में बैठता है क्या सीईओ बन के? और मे बी अमन गुप्ता, नो ना, दे आर जस्ट इन्वेस्टर्स। दे कैन बी ऑन द बोर्ड, कि उनको बोल सकते कि ऐसा करो वैसा करो। दिस पीपल एक्चुअली ना, ये वाबस पिंकर्स बोलता है कि एचयूएल को बोलता है कि अभी हमारा सीईओ होगा, वी विल हैव आवर सीईओ। एचयूएल को बोलेगा वी डोंट वांट योर सीईओ, आवर सीईओ विल लुक आफ्टर इट बिकॉज ना वी आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। ओके, तो मुकेश अंबानी का भी एक है प्राइवेट इक्विटी फंड, ही हैज सीईओ, एंड वो बोलते हैं ओके गो एंड टर्न अराउंड द कंपनी। अच्छा, प्रोबेबली टर्न अराउंड हो सकता है, इट कैन बी टर्न अराउंड, इट कैन नॉट बी, इट इज एट रिस्क, तो दोनों में है। अच्छा, विच हैज द हाईएस्ट रिस्क, विच हैज द हाईएस्ट रिस्क, रिस्क प्रोफाइल, हु हैज द हाईएस्ट रिस्क प्रोफाइल? ओके, अ कंपनी विच इज ऑलरेडी सेट अप और कंपनी विच इज येट टू बी सेट अप, विच हैज द हाईएस्ट रिस्क? This one, venture capital is high risk, yet to be set up, no? See, this took, they are into doldrums. Okay, now example, Tata Motor is also into problem. But is Tata Motor better than Ola? Competitive risk? Yes, correct. See, these are all things you answer. And when it comes for exam, or when it comes about, talking about writing exams, and you feel, अरे सर ये तो सब formulas था, ये तो हमको याद रहना. We have to, remember all these things. Now, would you ever forget venture capital and private equity? रोज आता है पेपर में. Every day it comes. Now you don't have to open the book and read. अभी बुक ओपन करने की जरूरत नहीं है. गो एंड ओपन, है ना, वो क्या है वेंचर कैपिटलिस्ट, क्या होता है, फिर उन्होंने पूरा दिया होगा, यहाँ पे लिखा होगा, यू कैन सी, बुक में लिखा होगा कहाँ पे, तो आई डोंट इवन नो कि किधर लिखा है वो। आई जस्ट गोइंग थ्रू द एरा वेंचर कैपिटलिस्ट। पढ़ो ये पूरा, याद रखो क्या लिखा है। ये भी प्राइवेट इक्विटी फंड लिखो। अब ये किधर तो लिखा है कोई तो पार्ट में, आई डोंट नो वेयर इट इज रिटन, बट अगर इफ यू रीड न्यूज़पेपर ये रोज ही आते हैं उसमें। ओके फाइन, ये हो गया फर्स्ट पार्ट। You raise funds, investor. Chalo, let's talk from investor perspective, because now we are talking about, as a research analyst. चलो, रेस फंड्स, यू रेस फंड्स, एक तुम्हारे खुद के पैसे थे, दूसरा इन्वेस्टर था, ठीक है। नाउ लेट्स से यू आर एन इन्वेस्टर,
Okay. Now it is like pure, I'm investing for stock gains. Okay. If I want to research something about, तो research करोगे ना कंपनी के बारे में, शॉप के बारे में, तो करेक्ट. कोई एक थर्ड इन्वेस्टर है प्राइवेट, जैसे तुमने बोला कि रिक्वायर, इनको भी रिसर्च एनालिस्ट लगेगा ना. ही विल रिक्वायर रिसर्च एनालिस्ट, करेक्ट. वेंचर कैपिटल को भी रिसर्च एनालिस्ट तो लगेंगे समझने को, बेसिक चीजें करने को. ओके. ना सिया, तुम ना एक फ्रेशर हो, यू आर अ फ्रेशर. आई हायर यू टू डू अ रिसर्च ऑन दिस स्टॉक, ऑन दिस शॉप. मेरे पास पैसा है, मेरे कोई फ्रेंड है हु वांट टू स्टार्ट अ शॉप. मुझे बताओ, व्हाट, वेयर विल यू स्टार्ट डूइंग रिसर्च, या फर्स्ट व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिसर्च. सिर्फ बेसिक याद है, शॉप खोल रहा है, ही इज ओपनिंग अ शॉप. ओके, वन ऑफ माई फ्रेंड इज ओपनिंग अ शॉप. या चलो तुम्हारा ही फ्रेंड है शॉप ओपन कर रहा है, ठीक है, मेरा फ्रेंड भी नहीं, तुम्हारा ही फ्रेंड है, इज ओपनिंग अ शॉप. क्या रिसर्च करोगे, पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप ऑफ रिसर्च. वन सेकेंड. ऑन फेल फाइनेंशियल, अरे आदित्य, हाउ कैन यू गेट फाइनेंशियल, तुमको पता भी है शॉप क्या है, फाइनेंशियल है किधर, अभी तक तो काल चालू भी नहीं किया उसने बिजनेस. को पैसा देना है ना, अर्ली स्टेज इन्वेस्टर है ना, वेंचर कैपिटल है. डेटा कलेक्शन नहीं, बेसिक, मेरे को बेसिक बताओ. शॉप खोल रहा है, मैं शॉप खोल रहा है, तो क्या रिसर्च होना चाहिए, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग. सी, मार्केट साइज, रिसर्च, अपॉर्चुनिटीज एक्सेट्रा, इज बेसिक. मेरे को बताओ किराना शॉप का क्या मार्केट साइज है, बताओ. आई वांट टू ओपन अ ग्रोसरी शॉप. अब पहले तो क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स. प्रोडक्ट्स ना, फर्स्ट इज प्रोडक्ट की, तो बेच क्या रहा है वो शॉप में. या करेक्ट, देन इट इज कस्टमर्स. now products, now let's say I want to open a Rolls Royce showroom, and I want to start a Rolls Royce showroom, and I am starting in a tier 3 city. क्या होगा, I want to open a Mercedes showroom in a tier 3 city. So first is basically the products of the company. अच्छा, Raju says footfall. Company has not even started and you are saying footfall. हाँ, बता नहीं, तुमने पढ़ा होगा ना, you must have read it somewhere. You think telling such things to an analyst like footfall and all, so he will get excited. I will tell you, the more basic things you keep in the interviews, the more they are impressed. I'm telling it from my experience. If I'm hiring a candidate, I don't want him to talk big words. I want him to come on basic, very basic. First is what kind of products the company makes. First is, no, कैसे मैंने, you didn't ask me, sir, which type of stock. Someone asked me, sir, ये shop. I just said, na, I'm open a shop. You never asked me, sir, what was the shop about. The shop. Now, which is a basic shop that you open? Okay. What are the types of shops? Grocery. Okay. And grocery store. What are types of shops? Grocery, medical. Grocery every time come. Electronics. And electronics. Medical. Okay, electronics. Stationery. Different. Everyone knows. Okay, stationery. Oh, no. Let's talk about retailer only, Himanji. Only retailer. Clothes. Okay, clothes. Fashion. Shoes. Fine. Shoes. So all different shops that we go. Plus. Herbal shop. Okay. Snacks. Okay. Snacks we'll talk in groceries only. हार्डवेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर से अलग नहीं होता ना, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर. तुम कहाँ कहाँ पे जाते हो, सोचो आसपास क्या है. हाँ, हार्ट लाइक, करेक्ट. अल्कोहल, हाँ, रेस्टोरेंट्स, अल्कोहल, अल्कोहल, रेस्टोरेंट्स, फर्नीचर. फाइन, वी हैव गॉट लॉट ऑफ. अच्छा, मोबाइल आल्सो, लेट्स टॉक अबाउट. ओके. ओके, फाइन, फाइन, फाइन. बैंक्स. ओके, फाइन. ग्रोसरी, बैंक्स इज लिटिल डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि सब बैंक सेम ही होता है ना. अच्छा, now why not banks? I'll tell you. अच्छा, can you differentiate between one grocery store and another grocery store? Can you? One medical store and another medical store. Correct, no? You can differentiate, correct?
अच्छा, can you differentiate between a Tata car and a Maruti car? So on what basis do you differentiate the car? First thing, and to buy a car, no, not about looking at the car. Looking at the car, this is Tata and Maruti. But on what basis do you say कि इसका गाड़ी अच्छा है उसका नहीं है? First is always the price. Pricing is the big factor. Second is your features. Correct. How the customer feedback is your features. Okay. Quality. Okay, fine. Quality, fine. And now both are 5-star, so obviously the quality issues goes. Service, fine. Service. The brand value, brand value Tata and Maruti, does they have different brand value? You will say the car is just good because Tata is a brand and Maruti is not. ऐसे तो नहीं है ना, मतलब ठीक है, both have the same value. So अगर see, now if I talk about Tata and MG, so then there is no comparison only, no? Tata and MG are not comparable depending on the brand. But now these are both big brands. Okay? Both are big brands. Both are good brands. Acha, price can be calculated. You have a number. Features. You can count. Count on features. Can you count on quality? Yes. So can you count on service? कि सर इसका सर्विस अच्छा है. Can you count कि टाटा मोटर्स का सर्विस 5-स्टार है एंड मारुति का सर्विस 4-स्टार है? कैन यू काउंट दैट? दो हमको पता है कि सर्विस, वो तो हमको पता है ना कि सर्विस आर नॉट गुड, बट कैन यू काउंट इट? No, na, service you cannot count. So can I say these are all quantitative features? Quantitative analysis which can be counted. इसके लिए quantitative बोलते हैं. Okay. ये भी quantitative because that can be counted. This is qualitative research. This is qualitative research. अच्छा, now usually qualitative and quantitative, which is counted, ये basic है. Second thing is usually qualitative analysis is related to financial statements. Usually quantitative analysis means related to the financial statement, P&L, income and expense. Now qualitative is something which cannot be measured. मतलब I am a good student, he is a bad student. On what basis do you judge? Marks. Both are good students. Does it mean both have the same marks? Behavior bhi hai na? Behavior can be measured. Character can be measured. No, तो वो हो गया सब qualitative research. Features भी usually measure नहीं होता. Features होगा तो price will differ ना. ऐसा नहीं कि एक feature है, दो feature है. If I talk about Tata Motors CarPlay and Maruti's Android Auto Play, Apple Play, क्या फर्क है दोनों में? क्वालिटी का. कैन यू जज इट? सर 5 क्वालिटी ज्यादा है, 2 क्वालिटी कम है. So usually these are all your qualitative research. Quantitative research is basically about the financial statements, whichever things impact the financial statements directly, because price change हुआ तो obviously Maruti's income will change. That is your quantitative research. Okay, now let's come over here. समझा अभी qualitative क्या है, quantitative क्या है? अच्छा, as a research analyst, what is your work? What is exactly your, तुम्हारा काम क्या होता है? रिसर्च करना, ठीक है? एनीथिंग एल्स उसके अलावा कुछ होता है काम तुम्हारा? What is
work of a research analyst? मैं ask you, तुमको मैंने क्यों रखा है? डेटा एंट्री. ओके, क्या करोगे डेटा एंट्री करके? हाँ, डू क्वालिटेटिव रिसर्च, डू क्वांटिटेटिव रिसर्च, एंड एट द एंड ये सब तुमने किया, प्राइस देखा, फीचर्स देखा, एंड अच्छा, बाय सेल. ओके फाइन, बाय सेल डिसीजन होता है. सो कैन आई से यू गिव इन्वेस्टर द डिसीजन टू मेक, इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए ये सब तुम करते हो. क्वालिटेटिव एनालिसिस बराबर, यू गैदर डेटा, यू कलेक्ट डेटा, यू एनालाइज द डेटा, एंड एट द एंड क्या करते हैं? एडवाइस. करेक्ट. एट द एंड यू एडवाइस. एग्री. हाँ, तो ये क्या पढ़ना है तुमको? डू यू वांट टू वन सेकेंड, वन सेकेंड गाइस, I will just want you to answer a basic question. What is the role of research analyst? A, B, C, D. What is the role of research analyst? Involve in analysis of data, collection data, help their clients take informed decision, or financial planning of the client. ये basic question है. अच्छा, now this analyst and decision making. Yeah, analyst and decision making, two imperative parameters involved are affected by which of the following factors? तुम्हारा decision which factor से impact होता है? अच्छा, management ethics. Isn't it a research? तुम किसी मैनेजमेंट के बारे. If Vijay Mallya opens a company, will you invest in that? नहीं. कंपनी में सिर्फ रेवेन्यू एंड कॉस्ट देखते हो, वो भी है ना मैनेजमेंट एथिक्स. अच्छा, इफिशिएंसी एंड ऑपरेशंस, इफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशंस. अच्छा, इसमें से क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव कौन से? बी इज व्हाट? क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च. बी इज क्वांट. कैन आई से ए एंड सी? इफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशंस. अच्छा, कैन बी क्वांटिटेटिव इफ यू टॉक इन रेशियोज टर्म, बट अभी तो मतलब हिज ऑपरेशंस आर इफिशिएंट. This both are your qualitative, this is your quantitative research. So can I say both सब research ही है ना? This is your all of the above. Good quality of research, ये बात मैं करता हूँ. Good quality of research analyst क्या है? Ability to read and understand, clarity in concepts, knack of numbers. Again basic है सर, basic questions. Okay, तो ये सब चीजों के लिए बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं होती. ओके, राइट. अच्छा, अभी रिसर्च की बात आते हैं. नहीं, इट्स ऑल ऑफ द अबव. ओके. अच्छा, उसमें जो था अभी एक बाई साइड और सेल साइड था. अभी रिसर्च होता है रिसर्च वाले, तो उसमें आई विल जस्ट गो टू just refraining from topics. Buy side and sell side. Now, what is the major difference between buy side and sell side analyst? क्या फर्क है? एनालिस्ट तो एनालिस्ट होता है, वैसे दो नाम क्यों है? जिनको नहीं पता, so I was on the buy side as well as on the sell side. अभी क्या फर्क था दोनों में? Now you will tell me कि at the end if you are applying for a role, तुमको कहाँ पे जॉब मिलेगा. ठीक है. अच्छा, buy side doesn't mean you buy a stock, sell side doesn't mean you sell a stock. ऐसा कुछ नहीं, उसमें ऐसा कुछ रीजन नहीं है. buy side and sell side. करेक्ट. बाय साइड्स आर ब्रोकर, सेल साइड्स आर यूजुअली ब्रोकर्स. व्हाट इज द डिफरेंस? ऐसा नाम क्यों आया है ये सेल साइड? व्हाई इज द नेम सेल साइड एंड व्हाई इज द नेम बाय साइड? के बाय साइड, सेल साइड, you don't sell the stock, you sell your research. You sell your research. Why will you sell it and what will you get? You actually sell your research. To whom? To whom? I will rather say to the buy side one. ठीक है, basic one. Sell your research to, and buy side is
buy the research. As of now, it's okay. Acha. Acha. Sell your research can be a price tag. Okay. That you sell for 500 rupees, 10, 100 rupees, 200 rupees, or 1000 rupees, 1 lakh rupees. Acha. What will this buy side guy do with the research? What will he do? He has given him the research. Research as in reports and all. Okay. Research means what? He will give him reports. He will give him financial models. Okay. फाइनेंशियल मॉडल्स ऑल डेटा वो जो हमने कलेक्ट किया सब उसको दे देगा फिर ये क्या करेगा इसका what buy side just now you said analyst what they help in decision making what will we do in decision they will make a decision and क्या करेगा वो डिसीजन लेके डिसीजन to buy or sell the stock okay buy or sell the stock in their portfolio buy or sell the stock in the portfolio बराबर ना ये रिसर्च के तो सेल साइड ऐसा समझना सेल साइड इज सेलिंग योर रिसर्च एंड बाइंग क्योंकि हम रिसर्च एनालिस्ट की बात कर रहे हैं पार्ट ऑफ रिसर्च एनालिस्ट buy side will pay the sell side and sell side will sell their reports to the buy side अच्छा how does sell side make money by selling how will buy side make money how will buy side make money profits by making profits okay sell side makes money by commission or maybe charge okay, basic charge now it is so usually brokerage hota hai because you don't sell actually your reports what happens there is a b2b type scenario okay I will sell let's say I'm a sell side analyst I will sell you the research so when you buy this stock now when you buy this stock you buy na so you require a broker to buy a stock Zerodha ICICI Securities HDFC Securities all securities yes banks yes securities you need a broker right you need a broker so usually the brokers are these people so what this guy will say okay let's say my friend's name is Raju okay now he is an analyst in Antique okay I was in HSBC mutual fund okay I was in HSBC mutual fund Raju says me Rishabh I give you research all my reports all my financial models and I tell you to buy XYZ stock okay he said that Rishabh buy HDFC Bank Rishabh buy HDFC Bank okay this is his reports this is investment thesis and all so where will I buy from I will tell Raju only Raju okay tell your company to place an order I will give you a brokerage so your commission or the brokerage is one and the same in this field okay मतलब वही वो हम broker में it is the brokerage they don't actually pay for your research they give you the deal that okay I will buy HDFC Bank and whatever the brokerage is it is yours as in for the company now you tell me as a fresher oh sorry okay which is the most less riskiest job a sell side job or a buy side job which is the most less risky job Achha, is it a guarantee that Raju said that Rishabh HDFC Bank will go up it is 100% sure that the stock will go up I have purchased there is nothing like 100% guarantee that the stock will go up so can I say I am at a higher risk okay this company makes money by profits this company makes money by selling their research so can I say like I am a client of Raju so Raju might be having hundreds lot of clients HSBC HDFC mutual fund DSP mutual fund Motilal mutual fund okay now tell me which analyst will have the highest salary I or Raju who will have the highest salary
because Raju is serving me and 100 different clients. What am I doing? Acha, can I say my profits depend on my fund size? If I only have 2,000 rupees, will I make big amount of profit? Acha, is money anything to do with Raju? His investment, his portfolio? So you tell me as a fresher, Acha, now what happens when I make a decision to buy? Obviously, I also put my research. Okay, I will not blindly trust Raju. I will also put my research on it, and then I will buy a stock. Then I will convince my investor or convince my manager, who is the fund manager. Okay, that sir, I think that we should buy HDFC. Raju has also told me, or I have done my own research. I have taken Raju's help to understand. Raju was the one who helped me to do various research, do some research on it. Then I will tell the fund manager, and then he will go and buy. And do you think if I am a fresher, this fund manager will listen to me? And I don't think no people want to go into mutual funds or maybe buy side. Sir, हमको buy side जाना है, buy side. See, ultimate goal is to go into buy side. But without experience, if you go into buy side, what will happen? So first of all, will they pay you enough salary? Even if you get a role, how much they will pay? See, stock, they don't do intraday trading. Huh? They don't do like stock is up, so you will sell, the stock is down, they invest for longer term. And let's say if the market is down, let's say market crash, like COVID example, or maybe downturn that is happening in downturn. As a fresher, is it better to be on the sell side or better to be on the buy side? In any scenario. So let's say you are a sell side analyst and a buy side analyst. The two analysts, you and your friend. Okay, me, I was buy side, Raju was a sell side analyst. In this market fall, who will lose his job? Raju or me? The first one to lose. Me. So buy side jobs are challenging jobs, and you go there while working in sell side only. You work in sell side for a few hours and then usually go to buy side. If you go to the buy side at the start, there's no harm going in it, but go in this way, salaries will be lower. If the sell side guys get 12 lakhs, you will only get 6 lakhs. If the sell side gets 25 lakhs, 20 lakhs, you will only get 10 lakhs. If a sell side guy is earning 1 crore, you will only get 50 lakhs. That too performance based. You will not get the entire 50 lakhs. And it depends on how big is the fund. If you work in HSB and if you work in HSBC and if you work in HDFC, it's a two different thing. HDFC is a bigger fund size. HSBC is a smaller fund size. So obviously in HSBC, your salary will be lower. Okay, so what? So to become a sell side analyst, what are the things required? When you sell your research, you need to know how to make reports. You need to know how to present yourself. You need to collect all the data. You need to go deep, do understanding. And after collecting all those data, you give it to a buy side guy, and the buy side start researching the data which is not a part of the regular financial statements, things which are not in the financial statement. So tell me, who does quantitative research? Quantitative, sell side or a buy side guy? Who will do the quantitative research? Major quantitative research, major. The sell side guy will do the major quantitative research, and the buy side guy will have majority focus on qualitative research. Qualitative research means interacting with the management, personally going out and seeing what is happening, go on personal any shops and see what is the change, what is the product line. That is called channel checks. So usually buy side guys do a lot of channel checks than sell side guys. Factory visit and all. Usually sell side guys also do, but buy side goes one step ahead. So if you want to be an analyst, you have to outperform the sell side guys. This is when you go to buy side. And for that, do you think this exam is fine? Research analyst exam you give and become an analyst.
You know, you compete with funds direct. So if you want to compete a person who is an experienced guy, let's say if you want to compete me, basically on the research part, you have to talk about the live data. You cannot go on the historically 5 years and say, sir, it has happened 5 years, the company has increased or decreased, ROE has increased, ROE has decreased, profits have increased because because in 2019, 2020 there was COVID, so profit declined. So 22 unlocking happened, so profit increased. See, I am 10 years in the industry and you're talking me about the past. Who knows about the past better, you or me? Better. I will know better about the past. You cannot go in the interview and talk about past reports. Sir, I made a model 5 years historical and 10 years forecasted. You should know. You should know what has happened. But you should not, that is not be a unique selling point that you talk about historical statement. You talk about the future presentation or the current events which are happening, because current events are very difficult. Or maybe I might not be knowing what has happened currently in the last 1 month. So, I will tell one of my students, he was a CA. He got into sell side roles, now into HDFC Securities. Sorry, Yes Securities. He just joined today. It was his first day. At times in my class in the morning calls, usually I read newspapers on a daily basis. He goes one step ahead, do chat GPT and find that how is that data coming from. He used to do that. Chat GPT, or maybe go into conference calls, do some research, industry reports and all. He used to tell me that, sir, आप ये wrong बोल रहे हो. You are saying this wrong, sir. That data point that you're talking is wrong. The interpretation is wrong, sir. These things have happened. So as per the data, X things will go up or X things will go down. He used to, he used to challenge me on my data. Now think, when you are challenging me in my den, can I say you must have done something additional than what I am doing on a regular basis? And does it mean only reading annual reports and newspaper? I get up at 4 a.m. in the morning and I read all those things. I have read it for the past 10 years. A new guy comes and compete me. So he was not competing on my past data. He was competing, sir, there was a news last month. There was a news last week, which you might have not seen. Probably. Can happen, no? That I missed the last week news. This is where, you become an analyst. This is where you compete with experienced people in their field. If you go them with this reports, with this research and all, it will never be easy for you to get into research roles. It is difficult. And first of the things, all things you should know. What is buy side, what is sell side, where you need to go first. Do I have to target buy side roles or do I have to target sell side roles? If I want to target buy side roles, at what level you need to research. Then you will get, you say, no, sir, I apply, but my CV doesn't get selected. What you will say? Clear NISM exam, so take me into buy side. Or sir, I have made a financial model, so take me into buy side. I'll show you one CV of my student. One CV of my student. One second. Okay. This is a CV of one of my student. Okay. I don't want to name. Okay. RK advisory training. Okay. Can anyone tell me what is his education? Looking at the CV. Forget about this. This is my part. This was not there when she joined. This was not a part of it. Okay. Apart from that, she is saying that I am interested into core finance roles. Okay, sir, I want to get into research roles. BCom. One of the worst degree ever, currently, recently pass out. Can I say it is a degree which is not even counted nowadays? If you say you have done BCom, people are saying
Why do you even do that BCom? It's not even recommend to do. See, no CA, no IPCC, nothing, huh? 12th and BCom. Today she is working into equity research role. On what basis? On the BCom degree, or on financial modeling, or on report writing? On what basis she is there? She is working in Read On, which is a Kolkata-based company, Read On Research. Okay, I have one more CV of a student who is a BCom graduate, and he had cracked an HDFC securities role. HDFC securities role, which a CFA level 3 student was not able to crack in his latest interview. Yesterday, last week only, I had recommended one student, CFA level 3 clear candidate for an HDFC internship role. Internship role. He said that he terribly failed in that. Why? And a BCom guy had cleared. What is the difference? Same CV. I am not getting his CV now, but it was the same CV. What made the difference? Skills made the difference. Writing skills on the reports. Someone said skills. Or tracking news on a daily basis, participating in the conference call, writing quarterly reports, tracking sector, track the sector, FMCG focusing on top 4 companies, develop financial model and access. I will also show what mail she did. I didn't refer her because the course was already going on. I didn't refer her anyway. I'll show you. This is practical stuff. I don't want to hide anything from you guys. This is a student who I'm trained and all. मैंने उसको सिखाया मॉडलिंग और उसको आ गया. It is not like that कि मैंने उसको मॉडलिंग सिखाया उसको. That's why she got. Show her mail once again. The mail that she sent to the recruiter. It was like 2 months into my training. Name is Tanisha. She sent this mail. Equity research position. You see the mail, something odd. Cover letter भी है. कुछ है मेल में. तुमको क्या लगता है ये सीवी भेजा? You do you think she sent this CV to him and he replied her back? He replied back just because she was working with me. She was, and I was teaching her. You see the way she had worked. Now this is more than a fresher from a BCom student. You see the report. And she had asked me, okay, there are various things which she has not done in this report, but the way she had made is the way I have told her. See this report. Just look at it. I'm not going to read it. The format. Wait. And I'll show my report. This is a report of mine, which is still published on the Bloomberg. See, I have a name over here. This is my company. I used to work in this company, sell side. Are my reports. What reports are not important. What you write in the report, that is much important. Okay. Reporter. So we will talk about this report writing tomorrow. Not report writing, but how do I start doing research on all these companies? See, this is an MBA SEM 2 student who has made this report. The basic report, company profile report, but it is made in such a way, and she has presented this report. She has presented the report. It is there on my YouTube channel. She has presented this report in a proper way, that what she has written in this report, what are the products, specifically which segmental breakup. This I have told to my students also to make, but she was an MBA SEM 2 student. Made a lot of errors at the start, but this is her research, basic research. As of now, nothing.
NISM 15 will not help you anywhere. It is just a license that you know driving. It can also become driving test in India can be copied. You can also clear the exam by copying it. You can also clear the exam in fluke. Can happen. So tomorrow we'll talk about this report, that how is this research done and what an analyst should do. What are the things to be kept in mind while doing research? The first part, and then we'll move on to our financial statement so that it becomes easy for you what actually we are researching and what is the purpose. It is not even writing exams. So when I will tell you start doing research on the company, so you should actually do research. Don't say, sir, I have marked the answers as you were giving. So all of the above in what research analyst quality is collecting data and all, but where to collect the data, how to format it, which data have you collected it. Okay. Okay. So I open the floor for questions. If anything specific related to this, just ask. We'll have for 15 minutes. Then we will stop it. So you can raise your hands. I will, unmute you. Any questions? If you have any questions, or else we'll wrap up. We will start tomorrow with actually what a research analyst does. And we'll talk about some terminologies. Like today, we talked about venture capitalist and all. So more about equity, what are the parts of equity and all. And then I will tell you what is a bonus split, something to, bonus split, buybacks, that you will remember it for your exams. Okay. Any questions? Everyone, please. There are a lot of chat. Acha, nothing is to be shared. Sorry, Suraj, I will not share all these things because this is a report which is made by one of my student, and recordings also I will not share, is because I am teaching this from my own pocket. Recordings are only for the students who have registered for the training. This I do it. That's why I tell you, take a pencil and just start writing it. See, recordings are available on YouTube. Now, why you want my recordings? It's available on the YouTube. I said, no, I am not here to teach you. I'm here to give my experience. And obviously, this experience, I cannot give it to anyone outside my comfort zone. Tools. Okay, we'll talk about it, Amisha, tomorrow. What are the things to, doing research? Forget about tools. First is about tools comes at the end. First, what will you do with that tool? You learn Power BI. Okay, what will you do with that Power BI? I learned how to drive a car. Now, I will sit home. So I know how to, start an Apple CarPlay. I know how to turn my mirrors. What will do I do with doing all those things? So you learn driving. Okay, I'll tell you, learn driving. Can you drive in a hilly area with rain, snow at the first? You learn driving in the driving school. I'll say, okay, drive in a tricky area directly. Career growth, sell side. Prituja, sell side guys has a good growth. Buy side is a retirement role where you earn a lot of money. Now you do your own research in that. Is the data taken? No. It is not only from annual report. It is from PPT. It is from newspaper. It is from quarterly reports. And yeah, annual report also is there, but from various reports as well. Yeah, it is difficult on Hillier. How do you define majority stake? I found 10 to 15, 25. Usually majority stake, Rahul, as per finance, it's said to be 40%, 35 to 40%. Usually. If you have 35 to 40% stake, it's said to be a majority stake. Means you are actually owning the company. 10, 15, 25% you are an investor. This is a part of CFA. You have said that 10, 15% invest, 20% it means you are an investor. You can still influence, but 10, 15% is said to be an investing perspective. If it's more than 40%, probably you are same like an owner. Now, sure, you will use 4 to 4x drive in any area. So now that's what you will do with the tools. First, you have to understand basic. I have never used anything apart from Excel and Word. I have never in my entire career
Okay, now this Power BI and all, okay, it is good to have, but first data collection, and the problem is, anywhere in the world, third party websites are not used to collect data like screener, measure, money control, tijori and all are not used to collect data, because data are live data. If you talk about past data, no one is going to listen to you. I will also not listen to you. Forget about my friends and my colleagues. You tell sir past में मैंने ये किया है वो किया है. अच्छा, why will I listen to you? If you are a CA CFA and you have done some research on the past, then okay, I will listen to you. Okay, what research you have? But if you are an MBA finance from a tier 2 tier 3 college, if you are a CFA fresher, I am not going to listen to you, because I'm not going to pay 10 lakhs to listen to the past performance. Tell me what is happening, what is currently happening. Okay. It's a presentation tool, Harshal, so not required. It is required. It is okay to have. Nothing harm in that. But what you do with that, the first step was just product. We just stopped at first products. First step is knowing about the products, price, features, quality, service. Ankit, why you want to pursue equity research? If you're so MBA is this finance? Because graduation in arts is economics, then it's fine. There are rules for economics. But sorry, arts as in what exactly? BA in? Okay. Any other? Should I open any? If we have anyone, I can. If you want to speak, anyone want to speak? I can. Gab allowed you to unmute yourself if you want. Okay. Can you raise your hands? I can unmute them. Rathod, Jaivik. हेलो, आवाज आ रही है सर? हाँ राथोड, हाँ. हाँ हाँ तो Jaivik. सर मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि एनआईएसएम का 50 एग्जाम क्लियर करके मेरा प्लान है कि सेबी आरए का एडवाइजरी का लाइसेंस लेने का प्लान है। और हम्म. मैंने बीकॉम किया है, इट इज़ पॉसिबल? हाँ, बट लाइसेंस लेके करोगे क्या? एडवाइजरी। कौन? यू हैव क्लाइंट्स? यस। बेस्ट, हाँ. एंड एडवाइजरी को एज पर द लॉस, एडवाइजरी का पैसा, स्टॉक एडवाइजरी इज डिफरेंट, एंड यू कैनॉट बी अ ब्रोकर. तो तुम्हारे ऐसा देखना है, तो प्रॉब्लम क्या आता है इंडियन मार्केट में, कि तुमने मुझे एक स्टॉक रेकमेंड किया, ठीक है, यस। तो फिर मैं तुमको कितना पैसा दूंगा उस पर? ऐसा है. ठीक है, तुम्हारे क्लाइंट है तो ठीक है, टोटली फाइन. यानी कि अगर इन फ्यूचर अगर ऐसा कोई भी ब्रोकर के साथ सब ब्रोकर वर्क करना हो तो क्या कर सकते हैं, या फिर सेबी हाँ, उसमें ऑब्जेक्शन उठा सकता है? तो सब ब्रोकर के लिए काम करना है, तुमको डेरिवेटिव्स का एग्जाम क्लियर होना चाहिए, इक्विटी नहीं नहीं, डेरिवेटिव. ऐसा नहीं, जैसे कि हाँ. मैं सेबी का मेरे पास आ गया एडवाइजर का लाइसेंस, ओके, तो हम्म. मुझे ऐसा साथ में सब ब्रोकर भी अगर किसी की नहीं ब्रोकर के साथ करना है तो नहीं पॉसिबल है? नहीं नहीं, वो का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है. तुम ले सकते हो, बट फिर एडवाइजरी नहीं करने का, एक ही कुछ करना है, एक तो ब्रोकिंग करो या एडवाइजरिंग करो, ऐसा. दोनों चीजें नहीं कर सकते, इसके लिए मैंने आज तक नहीं किया है. मेरा एडवाइजरी है म्यूचुअल फंड का, तो आई कैनॉट टेक, मतलब मैं एडवाइजिंग का पैसा नहीं ले सकता, मैं सिर्फ ब्रोकरेज ही ले सकता हूँ. अगर यानी ये से पता चला. क्या सेबी हुआ? बोलता है एक ही साइड से कमाओ, ज्यादा नहीं हाँ हाँ, कमाने का। ज्यादा नहीं कमाने का, हाँ, तो एक तो इसके लिए एडवाइजरिंग से पैसा नहीं बनता ना, ये मैंने बोला ना यहाँ पे. सेल साइड और बाई साइड में पैसा कहाँ से बनेगा? यस यस यस, सेल तुम्हारे, साइड पे। ये राजू के पास 10 100 क्लाइंट है, मेरे पास तो एक ही है ना, शेयर बड़ा है, नहीं बड़ा तो. नहीं मिलेगा कुछ। नहीं तो नेक्स्ट टाइम तो एक बार नीचे आ गया तो फिर पैसा कहाँ से आएगा? ऐसा है. सही से, ओके। थैंक यू सो मच। Shubham, you can message me on WhatsApp. I will let you know the details of the course, or else I can, put it over here as well. The website, I have a website. Acha, guys, those who are still there, I'll tell you, this is my website.
RK advisory. Uh, so here there is a sign up option. So if you sign, it is free. It is free. So what I have done is I have created a portal. In that portal, I will show you. I'll put my login ID. So let's say this is a recruiter. Okay, I will share this login ID with the recruiters. And what happens? So please register those who have not registered yet. I have asked few questions, your CV, your reports, and all, etc., etc. Okay, so now this option is only available with me as a host. So this portal is been shared with recruiters. Okay, see the members. When I see now, there are all members over here, and I have created a filter where I can see. Okay, I want a person who is a CA. Okay, so there's graduation, professional qualification. I want a person who is a CA. Okay, so it comes, and then I want his expected CTC not to be more than 10 lakhs. If I do it, see, I found one person. Okay. And when I open it over here, CCA, CFA level 1, immediate joiner, she is not working. Shikar, sorry, it's Shikar. Then I can open his LinkedIn ID directly from here. So if I open this, now I can get his profile picture, his CV. I can download. If reports he has made, he can have a report over here. I can get all the information. Now this I have created a much. This is a free one. This is a free portal for everyone, every HR. So if you are registered on it, probably your profile might come under this, something like that. If the recruiter is looking, so I will say uh, register on it. Just sign up. It's free. And let's say I also done graduation. Okay. Professional qualification also. If you have professional qualification, CFA, I want a level 1, CFA level 2, level 3 cleared. You can easily get all the candidates. I want person who is not working. I can filter it and I will get all the members over here. So register it. Those who have not, it will help you. I share this with. So this is not, I am not charging anything for this. This is I've kept open so that, all the, I find this problem with recruiters that they are not, because, when you send a CV, what happens? 1,000 CVs you get. And when you get thousands of CVs, it becomes a pain to open that 1,000 CVs. This is what I've created and easy for HR. But in distance, Ankit, yeah, Ankit, go ahead. Ankit, you can unmute. हेलो Yeah, Ankit. जैन सर हेलो. सर आवाज आ रही है मेरी आ रही है, आ रही है. हाँ सर मुझे पूछना था आपको मैसेज भी किया था अभी आज हाँ हाँ. मेरा 12th कॉमर्स से है बट हम्म, ग्रेजुएशन में फैमिली इशू की वजह से मैंने कंप्लीट नहीं कर पाया था बीए सॉरी बीकॉम नहीं ले पाया था ओके. और बीए किया इकोनॉमिक्स के साथ साथ में हम्म, ज्योग्राफी और इंग्लिश था तो इकोनॉमिक्स थर्ड ईयर तक था मेरा ओके. उसके बाद से मैं एमबीए कर रहा हूँ डिस्टेंस से हम्म. और साथ में मैं डिफेंस की प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो सर मुझे इसमें आना चाहिए या नहीं क्योंकि मेरा इसमें बहुत लगाव है या फिर इसमें इंटरेस्ट है नहीं, ज्यादा। इकोनॉमिक्स है तो मैं इसके लिए मैं पूछना बीए किस में किया तो नहीं, बीए वो इंग्लिश इंग्लिश में होगा तो फिर काम में नहीं आता, बट हाँ इकोनॉमिक्स आता है. देर आर ओपनिंग्स वेर they require people from economics but finance आना चाहिए, ऐसा types. ओके। अच्छा, तो yes you can come, you can come to the course. तो है, एमबीए कर रहे हो तो बेटर, वो चल जाता है एमबीए डिग्री, इट्स फाइन. जब तुम्हारा सर हो वो जाए. मेरा डिस्टेंस है तो कोई इशू नहीं होगा ना उसमें। क्या हुआ? सर डिस्टेंस है मेरा एमबीए। नहीं नहीं, वो कुछ फर्क नहीं पड़ता है. इट इज जस्ट दैट तुम जो चीज कर रहे हो वो बड़ा टाइम है तो ही आना कोर्स में, वरना मत आना, क्योंकि दिस इज एन एक्सटेंसिव कोर्स. हम रोज काम करते हैं, रोज हाँ मॉर्निंग सर कॉल. हाँ, मेरे पास टाइम है टाइम है। मतलब वो काम ही करना जैसा है. इट इज नॉट लाइक कोर्स नहीं है वो कि मैं तुमको कुछ स्पेसिफिक चीजें बता रहा हूँ. आई एम टीचिंग यू, मेंटरिंग यू, कि रोज तुमको कुछ काम करना है. मतलब जैसे मैं तुम्हारा बॉस हूँ एंड मैं तुमको वीकेंड्स को बताता हूँ कि चीजें कैसे करनी है, वीकडे को तुमको सब फॉलो करना है. वैसा है ओके ये, सर। वैसा चीज है ये. ओके. ओके रोज ओके हम सर। बातें करते हैं, एवरी डे वी मीट, एवरी डे वी टॉक. ऐसा नहीं है कि कोई डाउट हुआ तो मैं अगले हफ्ते सीधा आऊंगा. हर दिन मंडे टू फ्राइडे तो हर दिन होता है. आई हार्डली मिस द कॉल्स. ओके थैंक यू सो मच सर। हेलो। हेलो। हाँ मन. हेलो। हाँ मन, हाँ मन, बोलो. हाँ तो गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग. हाँ तो मैं एक बेसिक क्वेश्चन था
हम्म। मतलब कोर्स से रिलेटेड नहीं, मैं एमबीए फाइनेंस कंप्लीट किया हुआ, अभी क्रेडिट एनालिस्ट का जॉब कर रहा हूँ। और ओके। रिसर्च एनालिस्ट के बारे में भी पढ़ रहा था यूट्यूब में, तो हम्म। देख रहा था। तो आपको आपके बारे में तो मुझे लिंक्डइन से पता चला है। हम्म। तो मैं ज्वाइन किया, तो मैं एक बेसिक क्वेश्चन है। तो जैसे हम्म। यूट्यूब में कोई वीडियो दिखा रहे हैं एंड रिसर्च एनालिस्ट का, या हम्म। कोई भी फाइनेंशियल मॉडलिंग कोई भी कोर्स, वो लोग पे कर रहे हैं, मतलब हाँ। पैसा ले रहे हैं, ठीक है। हम्म। यूट्यूब में या अलग क्लास या किसी में भी। हम्म। तो आप यहाँ पर यूट्यूब में नहीं दिखा रहे, तो आपका मतलब यूट्यूब से तो कोई प्रॉफिट होने वाला है नहीं। नहीं। और हाँ। जूम टीवी से कोई प्रॉफिट, तो इसमें आपका क्या प्रॉफिट है? हम लोग को तो नॉलेज मिलेगा, तो ये तो बहुत अच्छा है। ये ये तो अभी। आप बहुत हेल्पफुल कर रहे हो, ये एकदम इसके लिए तो थैंक यू। तो हम्म। लेकिन तो आपका क्या फायदा है इसमें? सी मुझे अगर प्रॉफिट बनाना होता ना तो मैं HSBC का जॉब छोड़ के सिखाने कभी नहीं आता। एग्जैक्टली, तो हाँ। इसीलिए तो मेरे से क्वेश्चन आया है। तो क्या है ना, अभी क्या हो रहा है ना, आई विल टेल यू। लेट्स से अभी लेट्स से तुमको जैसे रिसर्च में आना है, ठीक है, फाइन। तुम कल मेरे पास आते हो कि सर मुझे ना रिसर्च में आना है। हम्म, तो फिर मैं बोलूंगा अरे तुमको बेसिक चीजें नहीं आ रहा है, तो तुमको फिर रिसर्च में मैं रेकमेंड भी कैसे करूँ? तो ये मैं क्यों हम्म, कर रहा हूँ, ये मेरे स्टूडेंट्स के लिए भी है, सबके लिए, कि कल आके तुम इंटरव्यू को भी जाओ। सी मेरा पर्पज है तुम प्लेस हो जाओ। मैं ये पैसे के लिए नहीं करता। अभी मैं पैसे के लिए क्यों कर रहा हूँ वो कोर्स, क्योंकि मैं वहां पे टाइम दे रहा हूँ, एंड मैं फ्री में किया तो पीपल वैल्यू नहीं करते फ्री चीजों को। या अभी ये ये मैंने तो फ्री है। क्यों रखा है, क्योंकि ये बेसिक है, तुमको बेसिक सब आना चाहिए। उससे क्या होगा कि हम जब कल इंटरेक्ट करेंगे तो तुमको बेसिक चीज तो पता है ना। कल मैं फेस वैल्यू ये बोलूँ वो तो भी है। पता नहीं था, तो और मैं तुमको रिसर्च सिखा रहा हूँ, ऐसा हो जाएगा। मार्केट वैल्यू क्या है ये पता नहीं, ये वेंचर कैपिटलिस्ट और तुम्हारे प्राइवेट इक्विटी में फर्क क्या है पता नहीं, और हम बोलते हैं कि सर मेरे को प्राइवेट इक्विटी में जाना है, मेरे को M&A में जाना है। तो तो मतलब ये वाला कोर्स आपका पूरा बेसिक कोर्स है ना? बेसिक नहीं, मतलब उसमें तो NISM के एग्जाम्स क्लियर होने चाहिए ना तुमको, ऐसा है। हाँ। तो समझो कि ओके। मैं तुमको ड्राइविंग करने सिखा रहा हूँ, कि कम से सिखा कम दे रहे हैं। एलिजिबल तो हो जाओ हम्म, किसी से बात करने के लिए, मेरे से भी। मतलब मैं एग्जैक्टली। मेरे लिए कर रहा हूँ, ऐसा बोलो कि कल तुम मेरे से बात करोगे तो थोड़ा ढंग से बात करो। ऐसा नहीं हो कि हाँ। ना कि हवे में कुछ बात कर रहे हो, ऐसा टाइप्स समझ लेना, उसी के लिए कर रहा हूँ। वो मेरा मोटिव है कि तुम सीखो मेरे से ना, क्योंकि मैं ना बहुत एक्सट्रोवर्ट आदमी हूँ, मुझे ऐसा बात करने को अच्छा लगता है सबसे। बट बात फिर ऐसा कुछ भी तुम करोगे तो फिर मेरा होना ऐसा होगा कि अरे यार तुम क्या बात कर रहे हो, ऐसा। क्या होता है लॉजिकल कि ये बात तो करना फाइनेंस चाहिए। फाइनेंस इतना इजी है ना, खाली फुकट वो ये कॉम्प्लिकेट तो। करके रखा है लोगों ने। क्योंकि हम्म। शायद से जो प्रोफेसर्स है ना, वो लोग ने कभी प्रैक्टिकल चीजें पढ़ी नहीं है, तो उसके लिए उनको लगता है कि ये सब फॉर्मूलेज है खुद हाँ, के। तो ये तो मैं और भी एग्री करूंगा। तो जैसे कि मैं तो मतलब गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी था, तो हाँ। वहाँ पर सिर्फ थ्योरी पर रहता। और हाँ। जब जॉब में अभी क्रेडिट एनालिस्ट का कर रहा हूँ, तो पूरा प्रैक्टिकल है। मतलब हाँ कुछ मैथ ही नहीं करता ऐसे है। नहीं करता है, करेक्ट। तभी सोचो ना, वो एक प्रोफेसर है जिनको कभी मार्केट में इन्वेस्ट नहीं किया, कभी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं किया। अब मैं तो खुद म्यूचुअल फंड में काम किया, इतने इतने दुनिया भर से लोगों से बात की है। तो मुझे समझ है ना रिसर्च कैसे होता है। रिसर्च P&L बैलेंस शीट पे रिसर्च नहीं होता, वो तो काफी बेसिक है, हम्म, ऐसा। सो दिस इज हाउ, तो वो मुझे समझ रहा है कि देर इज अ गैप इन द इंडस्ट्री, कि अभी मेरे भी स्टूडेंट्स हैं, MBA है ना, मैं सिखाता हूँ। तो क्या होता है, मुझे ना 40 आवर्स ही दिए जाते हैं कोई चीज सिखाने को। तो मैं ये सिखाने भी जाऊँ, अभी अगर मैं फ्री ना करूँ तो मैं कैसे सिखाऊँ हर एक को? तो अभी कल लेते तुम मेरे स्टूडेंट हो MBA कॉलेज में, एग्जाम्पल, तुम तुम्हारा भाई या तुम्हारे कोई फ्रेंड्स। तो कल उठ के MBA में तुम मुझे ये क्वेश्चन मत पूछो ना कि सर ये फेस वैल्यू क्या होता है, ये मार्केट वैल्यू क्या होता है। मैं तुमको कोई अलग लेवल पे सिखा रहा हूँ। बट पता हम्म, चल रहा है कि यार तुम बेसिक की तुम्हारा खराब है, ऐसा हो रहा है। हाँ हाँ। तो कल हम बात भी करें तो आई आई अज्यूम कि चलो यार तुमको मैं कल रिकमेंड करना है, मुझे तो पता है कि ना इसको ये सब चीज़ तो आती है, मेरे से थोड़ी बहुत हम्म, चीज़ और सीख लिए, दैट्स फाइन। तो मैं नहीं बोल रहा कि मेरा कोर्स ज्वाइन करो, ये करो वो करो, फाइन, तुम आता हो जिनको इंटरेस्ट है। मैं नहीं जबरदस्ती बोल रहा हूँ कि करो, क्योंकि मैं आई एम नॉट डूइंग दिस ऑल फॉर मनी। अगर होता तो मैं कोर्स का फीस 1 लाख रुपए रखता, हाँ सर, वैसे ही रेट है अभी का। और मैं हाँ प्लेसमेंट के भी पैसे लेता। मुझे, मैं तो दोस्तों को हेल्प कर रहा हूँ मेरे, क्योंकि मेरे दोस्त बोलते हैं कि ऋषभ हमको ना अच्छे स्टूडेंट मिल नहीं रहे हैं MBA से। तो फिर वी आर फोर्स टू गेट अ CA रैंकर। CA रैंकर ऐसा भी नहीं कि CA चाहिए, दे वांट रैंकर्स, ऐसा हो गया कि हमको हम्म, CA चाहिए नहीं, CA तो कैसे भी आजकल क्लियर होता है। फिर स्पेसिफिक क्राइटेरिया होता है, रैंकर और फर्स्ट अटेम्प्ट ओनली अप्लाई। CFA तो ऐसा बोला कि CFA के साथ MBA क्यों नहीं किया, ऐसा हो रहा है अभी, ये दिस इज द सिनेरियो करेंटली। हम्म। नहीं सर, हम तो बहुत एक्साइटेड थे। मतलब मैं आज जॉब ही मतलब 9:30 में खत्म हुआ है, 15 मिनट में डिनर किए और फटाफट ज्वाइन किए है कि खत्म नहीं होना चाहिए। This is, see, knowledge is not which can I keep. I don't want to keep it on YouTube and all, is because these things can be copied easily. Hello. That's why. Yeah, Mayuri. Good evening, sir. Good evening.
Sir, currently है ना, actually I am an angel on sub-broker and I am also an AMFI registered mutual fund distributor. Okay. Hello, yes, sir, am I audible? Sorry. Am I audible? Yeah, you're audible. Yes, yes. Okay, so sir, currently I am an angel one sub-broker and AMFI registered mutual fund distributor, and also I prepare for the NISM research analyst exam. तो उसके बाद में क्या बेटर रहेगा सर, मतलब सेबी में रजिस्टर होना फॉर द इंडिविजुअल एडवाइजरी, और एल्स ये जो है नहीं, मतलब ब्रोकरेज you का उसी को कंटिन्यू करना? I said now you cannot be an advisor and a broker at the same time. हाँ, ओके. तो रिसर्च एनालिस्ट एग्जाम इज नॉट फॉर ब्रोकर्स. उनको जरूरत नहीं है करने की. डू इट फॉर अंडरस्टैंडिंग. डोंट डू इट. तो उससे कुछ फायदा नहीं होगा. बिकॉज रिसर्च एनालिस्ट एग्जाम आर ओके. स्पेसिफिकली फॉर पीपल हु हैंडल फंड्स. जैसे इफ यू हैव अ म्यूचुअल खुद ओके का, बट इफ यू हैव, सर, सॉरी. ओके बट अगर अपने को मतलब कैरियर ग्रोथ के हिसाब से देखे, लॉन्ग टर्म के हिसाब से कैरियर ग्रोथ के लिए, तो वो कौन सा बेटर रहेगा? कैरियर ग्रोथ किसमें ज्यादा है, एंजल वन सब ब्रोकर होने में या फिर उससे भी रजिस्टर एनालिस्ट में, नहीं, so फॉर द analyst, इंडिविजुअल see, ओनली? now here you are an AMFI register means you are having your own personal clients, correct? यस. So you are into a business. So research ओके. analyst is for job. So तुमको job में जाना है तो obviously research analyst is prefer. But if you're doing a business, then why you want to go into research analyst? Advisory. Advisory में जाना है तो वो म्यूचुअल फंड, सॉरी, NISM के 10A 10B है, that is advisory exams. नहीं सर, इंडिविजुअल एडवाइजरी है ना, उसके लिए वही बोल रहा, that is exam इंडिविजुअल रिसर्च 10A 10B है. वही मैं अभी बोल रहा था ना, we were talking about कि individual advisory में you cannot make money जितना ब्रोकरिंग में कमाते हो. ओके. ओके. वही तो ये बोला मैंने कि सेल साइड और बाय साइड ना, वही तो था. दिस इज ऑल एडवाइजरी पर, दिस इज ऑल ब्रोकर्स. जो तुम हो अभी, ये मैं एडवाइजर हो. तुम मुझे एडवाइस तो करके मैं तुमसे बाय करूँ सर ये फिर. सर ये एग्जाम क्लियर करने के बाद में मैं किसी क्लाइंट को ऐसे सेल साइड एनालिस्ट के तौर पे सजेशन देना विदाउट मनी पे नहीं, दे सकते हैं? नहीं, नहीं, तुम दे सकते सजेशन बट पैसा नहीं ले सकते वो चीज का. हाँ, नहीं, फ्री में देना है मतलब अपना नॉलेज शेयर के लिए, तो वो कर सकते हम्म. हैं कि उसमें फिर सेबी का कोई कंप्लायंस है? तो वही हो ना, यू कैनॉट बी अ ब्रोकर एंड यू कैनॉट बी एन एनालिस्ट एट द सेम टाइम. तुम अगर ब्रोकर ओके. हो तो यू कैनॉट गिव रिकमेंडेशंस. मतलब टुडे बट सर, यू आर एमफी फ्री में रजिस्टर्ड अपने ब्रोकर. क्लाइंट्स को देना? फ्री में इज फाइन, वो उसका कुछ है नहीं. यू कैनॉट मार्केट इट. आप मार्केट नहीं कर सकते कि मेरे से मैं रिसर्च देती हूँ. वो तुम पर्सनली बात करो, चल जाता. ओके. ओके, ठीक है, थैंक यू यू. कैनॉट से आई एम ऑल्सो एन एडवाइजर एंड आई एम ऑल्सो ब्रोकर. कैनॉट से दैट. ओके. ओके. या ऋषि, आई एम इन वेलिंगकर माटुंगा वाला, करेक्ट. आई यूज टू, आई टीच देयर. Okay, guys, see you tomorrow. We'll talk more about research tomorrow, more about products, how to start researching, and थोड़े बहुत terms I will again use. Okay. Thank you, guys. Good night, everyone. Have a good sleep. See you tomorrow. Bye bye.